तो अभी हम लोग लैपलेस इन्वर्स में है। तो आफ्टर वी लर्नड द स्टैंडर्ड फंक्शंस एंड द shifting theorem, the third topic is the partial fractions. So partial fractions is a topic that we have already learned in our 12th standard. So सेम अप्रोच हम लोग रखने वाले हैं। तो हर एक टाइप का एक एक सम मैंने लिया है यहाँ, तो वो मैं सॉल्व करने वाला हूँ। सो लेट्स गो अहेड एंड सॉल्व देम क्विकली। इनवर्स ऑफ 2s minus 4 upon s minus 1 into s minus 2 into s minus 3 करते हैं, तीनों को अलग अलग पार्शियल फ्रैक्शंस में तोड़ते हैं। a upon s minus 1, b upon s minus 2 और c upon s minus 3, b into s minus 2 into s minus 3, d into s minus 1 into s minus 3, c into s minus 1 into s minus 2। जो उसका डिनोमिनेटर है वो नहीं कंसिडर करना है। Very simple. Now we'll put s is equal to 1, we'll get the value of a. So 2 minus 4 is a into minus 1 into minus 2. 2a is minus 1. Put s is equal to 2. We get the value of b. 2 into 2 square minus 4 is b into 2 minus 1 into 3. This is 8 minus 4 into 1 minus 1. So b minus b is minus b is plus 4. So b is minus 4. So we have got a is as minus 1 and b as minus 4. Let's continue with c. For c you have to put s is equal to 3. So you put s is equal to 3. This equation is 9. 2 9s are 18 minus 4 is 14. And c is 2 into 1. So c is 7. Now we follow the normal inverse. a के वैल्यूज, b के वैल्यूज और c के वैल्यूज पार्शियल फ्रैक्शंस में लिख देना है। सो इट विल बी इनवर्स ऑफ -1 अपॉन s minus 1 -4 upon s minus 2 plus 7 upon s minus 3 will be minus e raised to t minus 4 e raised to 2t plus 7 e raised to 3t। So very simple इनवर्स हो गया पार्शियल फ्रैक्शन से फर्स्ट टाइप से। So when there are three different factors with three different constant values, and you can easily solve that. So now I'm going to quickly solve these two sums. So if we solve the fourth sum, we put s square is equal to x, ठीक है, उसको linear बना देंगे। It will be linear of x upon x square x plus 9 into x plus 4। तो अभी इसको भी a upon x plus 9 b upon x plus 4, so it will be a into x plus 4 plus b into x plus 9। अभी x is equal to minus 9 डालो, minus 9 is equal to 5a minus 5a, a will be 9 upon 5। Similarly b के लिए भी x equal to -4 डालो, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में -4 आ जाएगा, b into 5a होगा, 5b सॉरी। So b will be -4 by b, just checking, it's -9, this is -5, -4, okay,
So now inverse will be, is a constant, so 9 upon 5 upon x plus 9 minus 4 upon 5 upon x plus 4. Now we are going to resubstitute x is equal to s square, दोनों साइन फंक्शन हो जाएंगे. सो 9 अपॉन 5 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 4 अपॉन 5 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4. तो 1 अपॉन 3 साइन 3d हो जाएगा वो. 9 अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन 3 साइन 3d ये वाला, माइनस 4 अपॉन 5 1 अपॉन 2 साइन ऑफ 2t. So 9 by 15 sin 3t minus 4 by 10 sin 2t. You can cancel. 3 3s are 3 5 3 by 5 sin 3t 2 by 5 sin of 2t. Very simple. Now you don't have to write them, क्योंकि क्या होता है, एक है 1 upon s square plus 9 है, तो रूल है as plus b upon s square plus 9. But in this case you're not going to use that rule. ये शॉर्टकट मेथड है, डायरेक्टली s स्क्वायर उसको लीनियर बना के उसको सॉल्व कर दो. वेरी सिंपल. तो s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 माइनस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4. सीधा आप क्या लिख दो, wait, I have to write the question. तो s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 इंटू s स्क्वायर प्लस 4 है. यहाँ शॉर्टकट में डायरेक्टली लिख दो s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 माइनस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4. ठीक है. आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी s क्यूब प्लस 4s माइनस s क्यूब माइनस s. सो 4 माइनस 1 इज 3. सो 1 अपॉन 3 अगर मैंने बाहर लिख दिया वो ऑटोमेटिकली इट विल बी एडजस्टेड. बस ये हो गया cos t, ये हो गया cos ऑफ 2t. वेरी सिंपल. दो स्टेप में आपको 4 मार्क मिल जाएंगे. कमिंग टू द सेकेंड सम. सेकेंड सम में क्या होगा, s प्लस 4 अपॉन s स्क्वायर माइनस 1 इंटू s प्लस 1 है. तो क्या होगा, इधर s स्क्वायर माइनस 1 को मैं वापस s माइनस 1 इंटू s प्लस 1 लिखूंगा. So it will be s plus 4 upon s minus 1 into s plus 1 whole square. यहाँ रूल क्या है, रिपीटेड रूट को 2 लेना पड़ेगा आपको. s minus 1 plus c upon, अगर रिपीटेड रूट है तो 2 बार लेना पड़ेगा on a denominator. So it will be s plus 4 a into s plus 1 square b into s plus 1 into s minus 1 c into s minus 1. Very simple. First thing is put s is equal to 1, a मिलेगा. 5 is equal to 4a, a is 5 by 4, s equal to minus 1 you put, you will get c directly. It will 3 c into minus 2, so c is minus 3 by 2. अभी b के लिए कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं. वी हैव ऑलरेडी यूज दैट फैक्टर्स 1 एंड माइनस 1, सो यू कैन नॉट रिपीट दोज. जो भी आप डालोगे तो वो रिपीट नहीं होना चाहिए. तो वी कैन पुट s इक्वल टू 0 बिकॉज वी ऑलरेडी गॉट द वैल्यूज ऑफ a and c. सो पुट s इक्वल टू 0 थ्रू आउट द इक्वेशन. इट इज वेरी सिंपल. 0 डाला तो यहाँ 4 आएगा. a is 5 by 4 plus b which is not known, which is 1 into minus 1, the c जो minus 3 by 2, so minus 3 by 2 into minus 1 will be plus 3 by 2. ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. so 4 5 minus 6 plus, sorry, minus b is 4. It will be
minus 1 by 4. So 4 plus 1 by 4 is minus b. So it is 17 by 4. So b is minus 17 upon 4. So inverse आपका होगा a, which is minus 5 by 4 upon s minus 1. b minus 17 by 4 upon s plus 1. Or c minus 3 by 2 upon s plus 1 square. So it will be minus 5 by 4 e raised to t minus 17 by 4 e raised to minus t minus 3 by 2. अभी ये shifted है तो e raised to minus t बाहर आके inverse of 1 upon s square will be t. So that is the final answer. So that covers the first four sums very quickly.